Good morning, students. So, welcome to your English class. Lesson number 2, Great Indian Bustard. Part 1 video I have already shared on YouTube and I have sent the link on YouTube also. But I am very sorry to say it is viewed by only 7 people. उसके सिर्फ 7 व्यूज़ हैं, यानी क्लास में सिर्फ 7 लोगों ने देखा है. आप लोग को अपना स्टडी मटेरियल क्लास का बहुत सीरियसली लेना होगा. व्हाट्सएप पे जो भी मटेरियल ले आ रहा है उसको आपको सीरियसली पढ़ना होगा. रिमेंबर यू आर इन 8th स्टैंडर्ड नाउ. नेक्स्ट ईयर यू विल बी 9th स्टैंडर्ड. सो अभी आप 8th की पढ़ाई को इतना लाइटली नहीं ले सकते. व्हाट्सएप पे जो भी आ रहा है उसको अच्छे से पढ़ना है. सो यू कैन कम टू पेज नंबर 19 नाउ. 19 ऑफ योर इंग्लिश फेरी टेक्स्ट बुक. हमने यहाँ तक ख़त्म किया था. इट इज़ द मदर बर्ड हु डज दिस अलोन. ठीक है. सो अब हम स्टार्ट करेंगे इस अनूप के डायलॉग से. अनूप, दिस बर्ड इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर बर्ड्स दैट वी सी और रीड अबाउट. वेयर कैन वी सी इट? अनूप बोलता है ये बर्ड कहाँ देख सकते हैं हम, बिकॉज इट्स डिफरेंट. मिस पॉल, alas, it is not so easy to spot one. Because it is not easy to spot one. Why? There are only 150 birds left in India. टोटल 150 बर्ड्स ही हैं. मोस्ट ऑफ देम आर इन राजस्थान एंड गुजरात. देर आर अ फ्यू बर्ड्स स्टिल इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश. बट दे हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा एंड तमिलनाडु. ओके. Indeed, I read that it is in great danger. Anup says, I read that it is in great danger. Something about being called critically endangered. Underline this word and you give it number 8. What is the meaning of this? Critically मतलब seriously. Endangered means in danger. It is facing the danger of extinction. Extinction मतलब completely गायब हो जाना. इसके numbers कितने हैं इंडिया में? Only 150. सो अगर ऐसा ही रहा तो ये और नंबर्स कम हो जाएंगे ना. एक दिन नंबर 0 हो जाएगा. जिस दिन नंबर 0 हुआ मीन्स इट इज एक्सटिंक्ट. मिस पॉल, येस, वी नीड टू प्रोटेक्ट इट सो दैट इट डज नॉट बिकम एक्सटिंक्ट. व्हेन वी से दैट इट इज स्पीशीज इज एक्सटिंक्ट, इट मीन्स देयर इज नॉट अ सिंगल लिविंग मेंबर लेफ्ट ऑफ दैट स्पीशीज. सो यू कैन अंडरलाइन द वर्ड एक्सटिंक्ट, जिसका मीनिंग भी लिखा ही हुआ है. Not a single living member of that species is left on earth. That means वो extinct हो चुका है. Dinosaur, your favorite animal, is extinct. तो डायनासोर आप देखते हैं क्या? रियल में कभी देखा है डायनासोर? नहीं, क्योंकि वो एक्सटिंक्ट है. अनूप, I remember reading that a bird called dodo is extinct. Can that happen to the GIB? अनूप कहता है डोडो भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, एक बर्ड. तो GIB के साथ भी ऐसा ही होगा. मिस पॉल, इट कुड हैपन. हाँ, हो सकता है. देन स्टूडेंट्स लाइक यू विल ओनली बी एबल टू सी पिक्चर्स ऑफ द बर्ड एंड नेवर इन रियलिटी. फिर उसके सिर्फ पिक्चर्स ही देखने मिलेंगे, रियल में वो बर्ड देखने नहीं मिलेगा. यू कैन टर्न द पेज नंबर 20. अनूप सेज वाई सो? मिस पॉल, वेल देर आर सेवरल रीजन्स. कैसे वो एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड हो रहा है? The GIB found in some parts of Pakistan is hunted there. वहाँ पे उसकी hunting होती है. पोचिंग. पोचिंग का मतलब illegal hunting is still practiced in India. Also there is a sharp decline in the natural habitat of this bird. Decline means decrease. इसका जो natural habitat है उस वो decrease हो गया है. क्यों decrease हुआ? क्योंकि वहाँ पे हमने human settlement start किए हैं. A major cause is the expansion of agricultural fields and increase in mechanized farming in the areas where the GIB lives. आपने चैप्टर के बिगिनिंग में पढ़ा था कि उसको ओपन एरियाज़ में रहता है, वो वास्ट एरियाज़ में, जहाँ पे स्पार्स ग्रास होती है. तो वहाँ पे एग्रीकल्चर होने लगा है, खेती होने लगी है. और मैकेनाइज्ड फार्मिंग की वजह से एग्रीकल्चर एरिया इज एक्सपैंडिंग. दैट मीन्स इट्स नेचुरल हैबिटेट एरिया इज डिक्रीजिंग. देन देर आर सम अदर रीजन्स दैट मे सरप्राइज यू. मिस पॉल कहती है कि कुछ और रीजन्स भी हैं विच कैन सरप्राइज. डॉग्स आर अ मेजर थ्रेट टू द GIB. थ्रेट मीन्स डेंजर. एज आई हैव मैंशनड अर्लियर, द GIB lays its eggs on the ground and dogs often eat the eggs. Okay, next, sometimes a GIB may simply dash against the high tension electric wire planted in its habitat.
बिकॉज अभी ह्यूमन सेटलमेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी भी होगा, तो कभी कभी GIB जो है वो इट टचेज द हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर एंड गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक. इलेक्ट्रोक्यूटेड मीन्स डेथ बाय इलेक्ट्रिक शॉक. It may also be hit by fast moving vehicles because on the road if the GIB is moving, it may be hit by the fast moving vehicles. Anup, is anything being done to protect the GIB from these threats? Anup is asking ki are we doing anything to protect these? Miss Paul says protecting any species requires joint efforts by research institutes, scientific organizations, government departments and NGOs. Research helps to understand the issues. Scientists help to look at possible ways to address the issue. Address means to deal with them. While the government can help by setting aside funds and making suitable laws as well as ensuring their implementation. And what do the NGOs choose? NGOs का full form non-governmental organizations. They can create awareness and support conservation efforts. So इस तरह से research institute, scientists, government departments and NGOs सबका एक team effort से ही कोई species को protect किया जा सकता है. अनूप, can students like me help in any way? अनूप कहता है कि हम कुछ help कर सकते हैं students. Miss Paul, you have already started by trying to know more about this bird. तुमने जानने की इंटरेस्ट दिखाने से ही लगता है कि तुम कुछ कर रहे हो. As you know now, the GIB is a fascinating bird. That means it is very attractive, it is magnificent. Fascinating means magnificent, beautiful. And it is in great danger. You must share this information with your friends. You could also work to spread the message of conservation of the species and their habitats. The future and safety of wildlife and the environment lies in the hands of young people like you. Okay, so this is how they can protect the species. Anup, indeed I shall. Thank you for the interview. So this is how the interview ends. Now we will read this one box. IUCN, it is International Union for Conservation of Nature, is the global authority on the status of the natural world and the measures taken to safeguard it. So ये authority है जो वाइल्ड लाइफ के बारे में सारे measures लेती है और उनको protect करती है. The IUCN Red List. Red List क्या है? It helps us to understand at what level of risk a species is. उनकी एक list बनती है जिसमें हमको पता चलता है कि कौन सी species को कितना danger है. As per the Red List of 2011, the GIB is a critically endangered species. This means that it faces an extremely high risk of extinction in the wild. So this is how the Red List is of 2011. Now it is 2020. I am sure the Red List might tell, the next Red List might tell that the GIB is extinct. Let us read a little bit about the authors. Meena Raghunathan has worked as an environmental educator for close to 20 years. She has been teaching on environmental issues. She has been involved closely in education and skill development for the last 14 years and has authored or edited over 40 publications for teachers, students and the public. So she is related to teaching and she is also related to writing. She has also anchoring means comparing of a program, anchored several Government of India reports on sustainable development issues. Sustainable development is a word which is related to environment, यानी इस तरह का development which takes care of the environment also. Development का मतलब ये नहीं है कि हम environmental और ecological issues को भूल जाएं. तो sustainable development is one such thing. She writes for children as a hobby. And Mamta Pandya, this chapter is written by two authors. Second is Mamta Pandya. He has over 30 years of experience in environmental education and instructional design. So she is again related to environment and education both. She is now an independent educator, editor and author. Okay. So this is the little information about the authors. Now let us
discuss these questions. The next set of questions I will be giving you in the next class. We will just, this exercise A, question A you will be writing in the textbook only with pen. जो आप मैंने आप यहाँ पे पेंसिल से लिखा है वो आप पेंसिल यहीं पे लिखोगे टेक्स्ट बुक में, आंसर A. आंसर B and C will be written in notebook. So first question, who is Miss Paul? Miss Paul is a wildlife researcher. Where does the GIB live? It lives in wide open landscapes. How can we say that GIB is not the heaviest bird? I am just writing in short, because it is in the world the heaviest bird is Kori bustard. GIB is heaviest bird in India and Kori bustard is heaviest bird in the world. Next question number 4, how do high tension electric wires affect the GIB? The GIB gets electrocuted. So I have written very short. You can also write in similar way, but the complete answer you should be able to write if needed. So this finishes your second video. I want everyone to watch both the videos. After that only, if the views of the YouTube cross 20, then only I will be assured that everyone has watched the video, and then only I will be discussing the question answers. And the written work of grammar, the writing section of grammar is also submitted a very few people. I think only Tanushri and Tarsh have given, and Shreyansh has given. No one else has given. So you have to, not Shreyansh, sorry, Rudransh has given. So everyone has to submit the writing section also. Diya also has given. Diya Patel has also given. So everyone has to submit the work. Thank you.